हाय वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे डाइट प्लान बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डाइट कैलकुलेटर, एंड दिस इज डाइट कैलकुलेटर 2. सो लेट्स गेट इनटू दिस. Alright, so in this calculator, this is the section here जहाँ पे हमें सारी डिटेल्स मिलेगी इस डाइट प्लान के बारे में. कितनी टोटल कैलोरीज हम खा रहे हैं, कितना प्रोटीन है डाइट प्लान में, कितने कार्ब्स है एंड कितना फैट है. Plus we can see the percentage also of protein, carbs and fats यहाँ पे. And apart from this section will inform us also in case हम minimum intake से नीचे रह जाते हैं किसी macronutrient में, उसके लिए हमें alert show करेगा यहाँ पर. All these macronutrients, proteins, carbs and fats, इन सब के important role हैं body में. So we will stay above minimum intake in all macronutrients ताकि हम help कर पाएँ अपनी body को healthy bodily function maintain रखने में. एंड ये सिर्फ इन्फॉर्म ही नहीं करेगा, ये हेल्प भी करेगा इनटेक इंक्रीज करने में. उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, बट बिफोर दैट हमें बाकी सेक्शन कवर करने जरूरी हैं. सो दिस इज द सेकंड सेक्शन हियर. दिस इज फॉर कीटो स्टैंडर्ड मैक्रोज रिकमेंडेशन. सो ये सेक्शन हमें बताएगा कीटो स्टैंडर्ड प्लान के अकॉर्डिंग कितना प्रोटीन होना चाहिए डाइट प्लान में, कितने कार्ब्स होने चाहिए एंड कितना फैट होना चाहिए. एंड ये सेक्शन कनेक्टेड है गोल कैलोरी बॉक्स से. So whatever we mention here, 2000 calories, 2500 calories, ये उसको कन्वर्ट कर देगा एंड हमें बताएगा टोटल कैलोरीज जो हमने मेंशन किया है उसमें कितने ग्राम्स प्रोटीन होना चाहिए, कितने ग्राम्स कार्ब्स होना चाहिए एंड कितने ग्राम्स फैट्स होना चाहिए कीटो स्टैंडर्ड प्लान के अकॉर्डिंग. सो दिस इज फॉर आवर आइडिया, सो वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली अगर हम कीटो प्लान बनाना चाहते हैं. Alright, so now let's start the calculator by filling up details in this section. So in this section, first row is for current weight. So I'll come here and I'll type my current weight. So my current weight is 82 kgs. I'll type here 82 and then come out of the cell. And the next row is for goal calories, how many calories we want to eat. So I'll come here and let's say I'm planning it for 2000 calories. So I'll type 2000 and then come out of the cell. By the way, if you're watching this video directly, then maybe you don't know how many calories you should eat for your goal. So for this you can go to the website fitnessmaths.com, and on the website you'll have to go to this page, goal planner. So you can click on it and it will open a calculator for you. Now in this calculator you can fill up your details and design your plan in few simple steps. So this will tell you how many calories you should start with for your goal, whatever it is, fat loss or muscle gain. And with that you might want to buy progress tracker also, which is here on the shop page. So you click on it and this is the progress tracker here. So basically what happens is, in our plan we have to keep on adjusting our calories to stay on track, otherwise हम एक ही weight पे stuck होके रह जाते हैं. So this progress tracker will help you record your progress first of all, because you can type your weight in it and keep record of it. Plus it will adjust your calories also along the way whenever you want. So it's very simple to use and you can watch tutorial video also. So you can go to this page in the drop down tutorial videos. So in this page you will find tutorial videos for all the products on this website, including goal planner and progress tracker. So you can watch it once and then decide it. Alright, so let's get back to the diet plan. Alright, so you filled up the details in this section and calculator is ready now. As we can see, this is already showing me alerts here and our recommendation section is also active. So ये हमें शो कर रहे हैं यहाँ पर जो 2000 कैलोरीज हमने मेंशन करी है गोल कैलोरीज बॉक्स में, इसमें से कितने ग्राम्स प्रोटीन होना चाहिए, कितने ग्राम्स कार्ब्स होने चाहिए, कितने ग्राम्स फैट होना चाहिए कीटो स्टैंडर्ड प्लान के अकॉर्डिंग. सो वी कैन गेट एन आइडिया फ्रॉम इट एंड यू कैन ट्राई टू मैच इट अगर हम कीटो प्लान बना रहे हैं. एंड जैसे मैंने बताया था, ये सेक्शन सिर्फ इन्फॉर्म ही नहीं करता है अगर हम मिनिमम इनटेक से नीचे चले जाते हैं, ये हेल्प भी करेगा इनटेक इंक्रीज करने में. सो अगर हम इनमें से किसी भी अलर्ट पे क्लिक करते हैं, सो वो हमें एक फूड आइटम लिस्ट में ले जाएगा जो पर्टिकुलर मैक्रोन्यूट्रिएंट की डोमिनेंट फूड आइटम लिस्ट है.
बाकी जो 2 कैलकुलेटर्स हैं वेबसाइट पे, उनमें ये सेक्शन कार्ब्स में भी मिनिमम इनटेक पे अलर्ट करता है, बट बिकॉज दिस डाइट कैलकुलेटर इज मोर अबाउट कीटो, सो मैंने इसको 10% पे सेट किया है. सो अगर हम 10% से नीचे जाते हैं कार्ब इनटेक में, देन इट विल शो अस अलर्ट हियर, अदरवाइज ये नहीं शो करेगा. ऑलराइट, सो नाउ टू सी हाउ इट वर्क्स. अगर हम इस अलर्ट पे क्लिक करते हैं जो टॉप पर है इन फ्रंट ऑफ प्रोटीन, इट इज टू लो, इंक्रीज प्रोटीन डोमिनेंट फूड्स. सो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं एंड ये हमें एक लिस्ट पे ले जाएगा, एंड लिस्ट में यहाँ पर प्रोटीन डोमिनेंट आइटम्स हैं. वी हैव एग्स, चिकन, साल्मन एंड पनीर, एंड ये सारे आइटम्स मेरी मेन लिस्ट में भी है. Alright, so now we can click on go back link here to go back to the main sheet. And here now I know which all items in my list are protein dominant. So अगर मैं प्रोटीन में मिनिमम इंटेक से नीचे रह जाता हूँ, I can simply increase the quantity of those items जो मैंने भी देखे हैं, and मिनिमम इंटेक से मैं ऊपर आ सकता हूँ. So that's how simple it is. So first मैं details fill कर दूंगा जो भी मैं खाना चाहता हूँ, and then I'll try to match it with keto macro recommendation. एंड जैसे जैसे मैं डिटेल्स अपनी फिल करता जाऊंगा यहाँ पे, वैसे वैसे यहाँ से अलर्ट्स रिमूव होते जाएंगे. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस. एंड लेट्स से इन द फर्स्ट मील आई वांट टू हैव 3 egg omelet. So I'll come here in front of egg, and this is in per piece calculation, so I have to just type how many eggs, how many pieces I need. So I'll type 3 here, and उसके बाद मैं सेल से बाहर कहीं भी क्लिक कर दूंगा. That's it. एंड टू कुक ऑमलेट मुझे ऑयल की भी ज़रूरत होगी, सो आई नीड 10 ml ऑफ ऑयल. मैं आऊँगा घी ऑयल के सामने यहाँ पर, एंड मैं टाइप करूँगा 10, एंड देन सेल की बाहर कहीं भी. दैट्स इट. सो दिस इज मेंशन्ड हियर इन ग्राम्स हियर, बट मेजरमेंट्स मिलीलीटर्स एंड ग्राम्स में हमेशा सेम ही आते हैं, सो देयर इज नो नीड टू वरी देयर. So now with this omelette, I will need 1 bread slice also in the morning, and because this is more on the side of keto diet, that's why I'm trying to use as less carbs as possible. So I'll type 1 here and then come out. As you can see, this is also in per piece calculation, so I have to just type how many pieces, how many bread slices I need, and that's what I did. And एक और important चीज़ है यहाँ पे, मेरे सारे calculators में bread and roti एक साथ है as one option. So if you come here, you will see a filter icon here on the side, and if you click on it, you can see both the items, and you can select whatever you want to eat, roti or bread. Yeah, you might not be able to see the list right now because of the security setting, but I'll attach a picture here ताकि आपको पता चल जाए वो list दिखती कैसी है. Alright, so bread select कर लेते हैं यहाँ पर, and with this I will need some butter also in morning. So let's say I want to have 10 grams of butter, so मैं bread के साथ butter use करूँगा. Alright, so that's done for the first meal. Now let's come down to the second meal. And by the way, if you want to check how many calories we have reached so far, so you can see it here and other details also. Alright, so let's come to the second meal here. So in the second meal, let's say I want to have 100 grams of chicken. So I'll come here in front of chicken and type 100, and then come out to the cell. And to cook chicken, I will need some oil. I'll take 10 ml of oil. I'll come in front of ghee oil, and मैं यहाँ पर type करूँगा 10, and then cell से बाहर कहीं भी. That's it. So with this, मैं cooked rice भी लूँगा. So I'll come here at the top in front of cooked rice, and मैं type करूँगा 100, and then cell के बाहर. By the way, this is white rice calculation here, but even if you use brown rice, हम ये calculation तब भी use कर सकते हैं, because total calorie calculation में दोनों में बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है. It is just the dietary fiber content जो brown rice में ज़्यादा होता है. So अगर मैं fat loss phase run कर रहा होता, मैं calorie deficit पे होता, so मैं brown rice use कर सकता था, क्योंकि comparatively वो मुझे feel full जल्दी कराता and comparatively feel full रखता ज़्यादा time के लिए भी compared to white rice. बट अगर हम इस चीज़ का ध्यान रखना चाहते हैं कि satisfied फील करना है लंबे टाइम के लिए या डाइटरी फाइबर इंटेक बढ़ाना है, so increasing salad in the diet plan is the best option. Now with that, next हम salad ऐड करेंगे मील में. So as you can see this option here, salad mix. So this is a mix of 5 different vegetables. And ज़्यादा से ज़्यादा मील्स के साथ दिन में salad खाना अच्छा होता है. And अगर उस salad में 4 to 5 different vegetables हों, then it's even better.
सो मैंने एक 5 डिफरेंट वेजिटेबल्स का मिक्सचर क्रिएट किया है एंड उसको एज सैलड यहाँ पर ऐड किया है, सो वी कैन यूज इट इन एवरी मील। एंड टू नो द नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स जो हैं इस लिस्ट में, हम सैलड मिक्स पे क्लिक कर सकते हैं। सो विल क्लिक ऑन इट एंड ये हमें लिस्ट पे ले जाएगा जो वेजिटेबल्स हैं उसमें। सो वी हैव ब्रोकली, कैरेट, केल, क्यूकम्बर एंड बीटरूट। वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती नहीं है, हम थोड़ा बहुत सैलड यूज़ कर सकते हैं हर मील के साथ विदाउट इवन कैलकुलेटिंग इट। बट इफ़ यू वांट टू बी मोर क्लियर अबाउट द कैलोरी कैलकुलेशन तो हम इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं इन दिस कैलकुलेटर। बट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं होती है हमें वेजिटेबल कैलोरी कैलकुलेशन में। सो इस कैलकुलेटर में भी हम एवरेज कैलोरी काउंट यूज़ करते हैं इस मिक्सचर का। सो हमें ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि हम 50% आइटम्स लें इस लिस्ट में से जब भी हम सैलड बनाएं। सो वो कोई भी 3 वेजिटेबल्स हो सकती हैं इसमें से, कोई भी 4 हो सकती हैं या पांचों की पांचों। ऑलराइट, सो नाउ आई गो बैक टू द मेन लिस्ट। मैं गो बैक लिंक पे क्लिक करूंगा मेन लिस्ट में जाने के लिए। सो आई क्लिक हियर एंड देन नाउ आई ऐड सम सैलड हियर। सो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा सैलड के सामने एंड देन आई टाइप 100 हियर एंड देन आउट ऑफ द सेल। सो मैं क्या करूँगा, मैं जो भी वेजिटेबल्स मुझे लेनी है वहाँ से सैलड के लिए वो मैं लूँगा उस लिस्ट में से एंड देन मैं ध्यान रखूँगा कि जो टोटल मिक्सचर का वेट है वो 100 ग्राम्स हो। ऑलराइट, सो दैट्स डन फॉर द सेकंड मील ऑल्सो। नाउ लेट्स कम डाउन टू थर्ड मील and as you can see we can check total calories also here, it's 954 and particular meal calories भी आ जाती हैं second meal के बाद। so second meal की जो calories हैं वो हैं 502 here। एंड बाय द वे इस कैलकुलेटर में कुछ आइटम्स की कैलकुलेशन हम चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चेंज कर सकते हैं पीनट बटर की कैलकुलेशन, रोटी की कैलकुलेशन, ब्रेड की कैलकुलेशन एंड पनीर की कैलकुलेशन। तो ये ऑप्शन क्यों है एंड कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, बट बिफोर दैट हम ये 2000 कैलोरी डाइट प्लान कंप्लीट कर लेते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स से इन द थर्ड मील आई वांट टू हैव 100 grams of salmon, so I'll come here in front of salmon and type 100. So in case you want a different fish or if you want to change any item, you can request for a new list and for that मैंने एक separate video बनाया है and link उसका description में, so you may check that too. And chicken में भी this is mixed chicken pieces calculation here, so if you want it for a specific part of chicken like chicken leg or chicken breast, you can mention that too in that new list, so you can check that video and then decide. Alright, let's come back to third meal. So salmon I have added already and I will need some oil also to cook this salmon, so I'll come here in front of ghee oil, I'll type 10 here, 10 ml of oil and then come out of the cell. उसके बाद मैं ऐड करूँगा सैलड, सो सैलड के सामने आ जाएंगे एंड टाइप करेंगे 100 एंड देन आउट ऑफ द सेल। बाय द वे इन केस मैं भूल गया हूँ कौन कौन सी वेजिटेबल है सैलड में, सो आई कैन क्लिक ऑन इट अगेन, आई कैन गो बैक टू द लिस्ट एंड देन क्लिक ऑन गो बैक लिंक। आफ्टर चेकिंग द नेम्स I can click on go back link and come back to the main list. Alright, so for dinner, let's say I want to have one roti also, so I'll come here in front of roti and because this is in per piece calculation, I have to just type how many rotis, how many pieces I need. I'll come here and I'll type 1 और उसके बाद मैं बाहर आ जाऊँगा सेल से, that's it. So this is done for third meal also. And so far we have reached 1422 calories and third meal की calories जो हैं वो ये हैं 469. Alright, let's come down to the next section. So this is pre-workout section here. So you can use it as pre-workout if you want or you can use it as regular meal like the others जो ऊपर हैं. So difference यहाँ पर ये है कि हर रो में अब हमें filter icon मिलता है and अगर हम click करते हैं तो हम multiple items में से select कर सकते हैं हम क्या खाना चाहते हैं। Alright, तो फर्स्ट 2 रोज जो हैं वो उन आइटम्स के लिए जो ग्राम्स कैलकुलेशन में एंड लास्ट 2 रोज हैं वो उन आइटम्स के लिए जो पर पीस कैलकुलेशन में है। सो अगर हम टॉप रो पे आते हैं एंड फिल्टर पे क्लिक करते हैं, सो वी कैन सी ऑल दोज आइटम्स जो ग्राम्स कैलकुलेशन में है इस कैलकुलेटर में। एंड अगेन शायद लिस्ट ना दिख रही हो बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी सेटिंग, बट आई विल अटैच अ पिक्चर हियर सो यू कैन सी हाउ इट लुक्स। Alright, second row is same grams calculation
and if you come in third row and click on the filter, then you can see all those items जो per piece calculation में है, and fourth row same है per piece calculation. Alright, so let's set pre-workout meal also. So let's say I want to have chicken with some rice. So I'll come here at the top in the first row because both are in grams calculation. I'll click on the filter and I'll select for rice first, cooked rice. I'll click here and let's say मैं 100 grams rice लेना चाहता हूँ. So I'll type 100 grams cooked rice and then out of the cell. And second row में मैं select करूँगा chicken. I'll search for chicken and select it, and let's say I want to have 50 grams of chicken. I'll type it and then come out. That's it. Now for this chicken, because I'll have to cook it, so I'll need some oil इसके लिए भी, and वो oil हम कहीं भी ऐड कर सकते हैं इस लिस्ट में ताकि वो टोटल कैलकुलेशन में आ जाए. So let's come here in the third meal. यहाँ पे मैंने 10 ml oil ऐड किया है for this salmon. Okay. इसको मैं डबल कर देता हूँ. Let's make it 20. So 10 ml for this salmon, 10 ml for this chicken जो pre-workout में है. Alright, so this is also done now. Now let's come down to the last section. So this is, I've named it extra because this is for snacks and all. So in all good diet plans थोड़े बहुत mix of nuts and कुछ fruits होने चाहिए. So we have mix of nuts here and we have fruits. I have added avocado also here because avocado is pretty famous in keto diet plans. So if you want to use it, you can add it. Alright, so let's say in this section I want to have a little bit of mix of nuts. So in mix of nuts we have almonds, cashews, walnuts and flax seeds. And this is also a mixture, so I will make sure कि मैं 50% items लूँ इस list में से. So let's say I want to have 20 grams of mix of nuts. I'll come here and type 20 and then come out of the cell. So मैं क्या करूँगा, मैं जो भी आइटम्स मुझे लेने हैं इस लिस्ट में से मैं उनको लूँगा एंड मैं ध्यान रखूँगा जो टोटल मिक्सचर का वेट है वो 20 ग्राम्स हो. Alright, so after that we'll add some fruits also. So we have this fruit salad mix and कौन कौन से fruits है इसमें नाम जानने के लिए हम क्लिक कर सकते हैं इस पे. So I'll click on it and ये हमें लिस्ट में ले जाएगा. So we have apple, blueberry, strawberries and grapes. Now this is also a mixture, तो मैं ध्यान रखूँगा कि मैं 50% आइटम्स लूँ इस लिस्ट में से. So वो कोई भी 2 हो सकते हैं, कोई भी 3 हो सकते हैं या चारों के चारों. And it is always good to have more than one because this is vegetable, fruits and mix of nuts. These are all products from Mother Nature's pharmacy. It keeps us healthy, so have most out of it. Alright, so I'll click on go back link now. Main list में वापस जाने के लिए. So I'll click here and then I'm back on the list. सबसे नीचे आ जाते हैं last section में. And let's say I want to have some, okay, and let's say I want to have 100 grams of fruit also. So I'll type 100 here and come out of the cell. Alright, so मैं क्या करूँगा, मैंने जो लिस्ट अभी देखी है उसमें से जो फ्रूट्स मुझे लेने हैं मैं लूँगा, मैं मिक्स करूँगा उनको, मैं ध्यान रखूँगा टोटल मिक्सचर का जो वेट है वो 100 ग्राम्स हो. Alright, so as you can see we have reached 1925 calories, that's almost 2000 calories. Now let's just go back to the main section ताकि हम देख लें कि हम किसी मैक्रोन्यूट्रिएंट में मिनिमम इंटेक से नीचे तो नहीं है. So as you can see कोई अलर्ट ये शो नहीं कर रहा है, that means we are good. And now let's match it with Keto Standard Macro recommendation. So according to Keto Standard Macro plan, 2000 calories में 100 grams protein होना था and I'm at 101 which is good, and हमें 50 grams carbs चाहिए थे. I'm at 133 which is high, so I'll bring it down, and 156 grams fat चाहिए थे, so I'm at 108. इसको हमें बढ़ाना होगा. So now I'll adjust it. I'll first of all adjust carb intake. Carb dominant items जो हैं उनकी quantity को मैं कम कर दूंगा and उसके बाद में fat intake बढ़ाऊंगा, fat dominant items की quantity को बढ़ाकर. And remember this, we don't have to match exact numbers here. We will just try our best to come as close as possible to these numbers. Alright, so let's start adjusting it. And मैं ये adjust कर रहा हूँ अपने according जैसे मुझे ठीक लगता है.
but you can do it as you like. एंड इस कैलकुलेटर का सिर्फ एक ही रूल है कि यहाँ पर कोई अलर्ट हमें नहीं दिखना चाहिए, एंड अगर कोई अलर्ट दिख रहा है हमें, दैट मीन्स वी आर बिलो हेल्दी लेवल, एंड हमें इनटेक इंक्रीज करना होगा उस मैक्रोन्यूट्रिएंट में जिसके सामने भी अलर्ट दिख रहा है यहाँ पे. So that is the only rule that we have to follow here. Alright, so let's start adjusting this plan. So in the first meal, I can remove this bread from here. And मैंने बटर इसमें ऐड किया था bread के साथ, but now I'll spread it on the omelette. Now let's come down to the second meal. So in the second meal we have, so in the second meal I can, now let's come down to second meal. So in the second meal I can live without cooked rice also. So I'll delete it from here. And that's it. So let's just check once carb intake कहाँ तक आ गया है. So this has come down to 90 grams, and let's come down to third meal now. So the third meal we can remove this roti. I'll delete it, come out of the cell, and let's check pre-workout section also. So pre-workout section में I'll keep this rice. मैं remove नहीं कर रहा हूँ because I need good energy for my workouts also. And in the last section we have mix of nuts and fruits. And fruits भी carb dominant है, but this is good for health, so I'm keeping it. And now let's just go back to the main section again to check कहाँ तक पहुँच गए हैं. Alright, so this is 63, which is good, not too far. And as you can see, total calories भी नीचे आ गई हैं. This is 5094 now. So now I'll start increasing fat intake here. So इस लिस्ट में fat dominant items में ghee oil है, butter है, peanut butter है, एंड जितने भी ये प्रोटीन डोमिनेंट आइटम्स हैं इनमें भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में फैट कंटेंट होता है. सो वी कैन यूज ऑल ऑफ इट, बट लेट्स स्टार्ट विद घी ऑयल एंड बटर. सो लेट्स से इन द फर्स्ट मील इंस्टेड ऑफ 10 grams of butter I'll have 15. I will spread it on the omelette. And in the second meal I have 10 ml of oil to cook this chicken, and I'll have 10 grams of ghee also with it. So I'll make it 20 and then come out of the cell. Alright, so let's come down to third meal, and the third meal also I'll have 10 grams of ghee with it separately. So यहाँ पर already हमारे पास 20 ml of oil है, 10 ml to cook this salmon, 10 ml to cook this chicken. I will add 10 grams of ghee also here, so I will type 30 here and then come out of the cell. And side by side हमें कैलोरीज भी चेक करनी होगी. सो वी हैव रीच्ड 1811 कैलोरीज. सो अभी हम इंक्रीज कर सकते हैं. लेट्स गो डाउन टू pre-workout section. So pre-workout section is good. I'm not increasing or decreasing anything here. Let's come down to the last one. So यहाँ पर हम mix of nuts थोड़े से increase कर देते हैं. So instead of 20, let's make it 30 and then come out of the cell. And अभी भी हम 1866 कैलोरीज पे हैं, so we still have 150 calories to increase. So let's come back up and let's say मैं 15 grams घी लूँगा in the third meal instead of 10. So मैंने 30 किया था, इसको मैं 35 कर देता हूँ. And same I'll do in the second meal also. So I'll take 15 grams of ghee अलग से, मैं 25 कर दूँगा इसको, 10 ml to cook this chicken and 15 grams ghee with it. Alright, so we have reached 1956 calories, which is almost 2000 calories. So और इसको increase करने की ज़रूरत नहीं है. This is pretty good. Now let's come back to the main section to check कहाँ पहुँच गए हैं. So as you can see, protein content जो है वो थोड़ा सा नीचे आ गया है. This was 101. It has come down to 93. But यहाँ पर कोई alert show नहीं कर रहे हैं. That means we are good. Plus this is not too far from this. हमें 100 चाहिए था, ये 93 पे है. This is pretty good. And carbs हमें 50 चाहिए थे, 66 पे हैं हम. That is also not too far. It's close by. And fat हमें चाहिए था 156 grams. We are at 146, which is also good. Percentage में भी we are not too far. हमें 20 grams, हमें 20% प्रोटीन चाहिए था. We are at 19. हमें 10% carbs चाहिए थी. We are 13. हमें 70% प्रोटीन चाहिए था. We are at 67. Alright, so that looks good, and this is done now. 2000 calorie diet plan. And now what I'll do, I'll take out a printout of this diet plan and stick it on the fridge or work desk, जहाँ पर भी मुझे daily दिखता रहे.
and I can start making another diet plan here. I can remove all this from here, delete it, and then make new entries here, because this is not a single sheet, this is a diet calculator, and we can make many diet plans out of it. Plus, I wanted to have this freedom also to move between different brands whenever we want. So that's why we have this option. Now we can change calculation of roti also, and that is not packaged item. So उसके बारे में मैं explain करूँगा in a bit, but पहले हम जो packaged items हैं उनकी calculation के बारे में बात कर रहे थे. Alright, so packaged items में every brand has details of their product for 100 grams of weight, nutrition value section में. So what we need to do is हमें nutrition value section में जाना है and जो 100 grams weight में values दे रखी हैं product की वो हमें ढूंढनी है. And for example, let's say we want to change calculation of paneer here in this calculator. So we will go to that product that we have, we'll go to nutrition value section and find 100 grams values. And then we'll come here to this calculator and we'll type 100 here in front of paneer because we want to match it. So we will see how much protein, carbs, fats and calories उस product में जो हमारे पास हैं. Plus we can see the details of this product here जो इस calculator में है. This has 20 grams of protein, 5 grams carbs, 22 fats, 296 calories. And now we can match it and decide accordingly that we want to change it or not. What I would say, अगर 20 calories से कम का difference है, then it's good to not do it because this is waste of time. 20 calories does not matter much. We can check for protein content also. अगर protein content में 5 grams या 5 grams से ज़्यादा का difference है, then it's good to change it. For example, let's say जो पनीर ब्रांड आपके पास है उसमें 100 grams में 15 grams ही protein है and this one has 20 grams of protein as you can see, then it is good to change it. Alright, so now let's go to that section जहाँ पे details हमें enter करनी है to change calculation. So for that we'll have to move to this side of the calculator. Alright, so this is the section where we have to enter details to change the calculation in the main list. So this row is for bread, this row is for peanut butter, this one is for paneer, and this is for roti calculation. Alright, so for example, let's say जो पनीर ब्रांड आपके पास है उसमें सिर्फ 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम कार्ब्स, 1 ग्राम फैट्स एंड 1 ही कैलोरी है. Just to show you how it works. So we'll come to this row. पनीर के सामने weight already mention है यहाँ पे 100 grams and हम mention करेंगे इसकी details, values जो हैं 100 grams में 1 gram protein, 1 gram carbs, 1 gram fat, 1 calorie. And then in this box we have to type 1 again to confirm that we want to change the calculation. So I'll type 1 here and then come out, and now this will send the details to the calculator to change it in the main list. But एक बार पहले देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या values हैं अभी before changing it. So मैं delete कर देता हूँ यहाँ से and let's go to the main list again. And as you can see here we have 20 grams of protein, 5 carbs, 22 fats and 296 calories. ये सब 111 and 1 में change हो जाएगा. Alright, so let's go back to that section again and change it now. So we'll type 1 here and then let's go back. And as you can see, this has changed now. So this is 1, 1, 1 and 1. So this is how we can change the calculation of items. Those are in grams calculation. So peanut butter के लिए भी same ही है. हम product के nutrition value section में जाएंगे. 100 grams weight में जो उसकी values हैं वो देख लेंगे. वहाँ से हमें चाहिए होगा protein, carb, fat and calories कितनी हैं उसको हम enter कर देंगे यहाँ पर and 1 टाइप कर देंगे उसके बाद confirm करने के लिए.
एंड दैट्स इट, कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। एंड फॉर पर पीस कैलकुलेशन हमें थोड़ी सी और एफर्ट्स करनी होंगी। उसके लिए हमें इस कैलकुलेटर में जाना होगा, वेबसाइट पे। दिस वन इज फ्री टू यूज। यहाँ पे डिटेल्स आपसे मांगेगा, टोटल वेट जो पैकेट है आपके पास उसका, एंड देन अगेन डिटेल्स फॉर 100 ग्राम्स ऑफ वेट जैसे हमने अभी एंटर करी है, एंड देन एट द एंड टोटल नंबर ऑफ पीसेस जो उस पैकेट में है। सो वहाँ पे आपको पर पीस कैलकुलेशन मिल जाएगी उस प्रोडक्ट की। एंड देन वापस आएंगे हम इस कैलकुलेटर में एंड वो डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर देंगे। प्रोटीन इन पर पीस, कार्ब्स इन पर पीस, फैट्स इन पर पीस, कैलोरीज इन पर पीस, एंड देन 1 टाइप करना है कंफर्म करने के लिए, एंड डिटेल्स न्यू ऐड हो जाएंगी। सो ऐसे हम चेंज करेंगे कैलकुलेशन उन आइटम्स की जो पर पीस कैलकुलेशन है। हमें वेबसाइट पे जाना है, डिटेल्स वहाँ पे एंटर करनी है, जो पर पीस कैलकुलेशन वहाँ पर मिलेगी वो यहाँ पर आके एंटर कर देनी है। ऑलराइट, लास्ट हम आ जाते हैं रोटी कैलकुलेशन पे। रोटी कैलकुलेशन में रोटी साइज एंड कैलोरी डिपेंड करती है हर फैमिली के स्टाइल ऑफ ईटिंग पे, कैसी उनको पसंद है। तो इस कैलकुलेटर में जो हम कैलकुलेशन यूज़ कर रहे हैं उसके लिए मैंने डेटा कलेक्ट किया था 6 डिफरेंट फैमिलीज से, इंक्लूडिंग माइन। एंड मेरी कैलकुलेशन में जो स्मॉलेस्ट रोटी थी वो थी 110 कैलोरीज की, एंड जो बड़ी रोटी थी वो थी 144 पॉइंट समथिंग, राउंड फिगर 145 कैलोरीज। तो मैंने एक मिडिल नंबर सेलेक्ट किया इसमें से 127 कैलोरीज फॉर रोटी कैलकुलेशन। तो इसमें 17 कैलोरीज का डिफरेंस है दोनों ही एंड से, टॉप एंड एंड लो एंड से। सो दिस कीप्स अस इन फेयर जोन एंड मेक्स आवर लाइफ सिंपल। सो हम इसलिए इसको यूज़ कर रहे हैं, बट इसको अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो उसको बड़ी आसानी से हम चेंज भी कर सकते हैं। सो रोटी कैलकुलेशन में हमें टोटल वेट जो है रॉ फ्लावर का, रॉ आटा जो है उसको मेजर कर लेना है रोटी बनाने से पहले, एंड वो एंटर करेंगे हम यहाँ पर। एंड एट द एंड सिर्फ टोटल नंबर ऑफ रोटीज जो बनी है उस आटे से वो काउंट कर लेनी है, एंड वो एंटर करनी है यहाँ पर। एंड देन सेम एज अदर्स यहाँ पर टाइप करना है 1 कैलकुलेशन को चेंज करने के लिए। ऑलराइट, सो फॉर नाउ ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा अभी सुनने में, बट रिमेंबर दिस, ये हमें डेली नहीं करना है। हमें इस सेक्शन में आने की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब हम किसी प्रोडक्ट की कैलकुलेशन को चेंज करना चाहते हैं। सो रोटी कैलकुलेशन में भी हमें डेली करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देयर इज़ वन थिंग दैट आई हैव नोटिस इन माय एक्सपीरियंस, 2 डिफरेंट फैमिलीज 2 डिफरेंट साइज़ की रोटी बना सकते हैं, दोनों में कैलोरीज में डिफरेंस भी काफ़ी हो सकता है, बट विद इन द सेम फैमिली हम हमेशा सेम साइज़ की रोटी के अराउंड ही घूमते हैं। सो हमें इसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। Alright, so that's it about this calculator. Alright, so this was all about the calculator, how we can use it. And at the end I would say, if you think you understand it and you can do it, then go for it. Because the main goal behind making this calculator was to make it easier for everyone to design, plan, track progress and calculate calories. So if you think you understand it, I'm telling you these tools are amazing. It saves a lot of time and energy. If you have any doubt, watch the video again. I'm sure it will help you. But in case you still have any question, you can then always email me at this address and I will try to help you as soon as possible. I'll maybe make another video on your question. So that's all for this one and take care.